Good afternoon. कैसे हैं आप लोग? कोई चेंजेस? मतलब अच्छी चीज के लिए ना? गुड कॉजेस, गुड, वेरी गुड. क्या कर रहे थे लास्ट क्लास? हम रिलीजियस एक्सपीरियंस डिस्कस कर रहे थे. इंट्रोडक्शन वाज डन. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? Emotional is like it is based on feelings, devotion, love. Emotion becomes the medium of truth. For example, bhakti experience. And when it comes to mystical experience, it is like direct union with the ultimate reality. For example, when you meditate, you feel that you lose ego. That is what drives you for a good revelation and way of life. And when it comes to intellectual experience, it is revealed through reason or insights. Basically, without the involvement of senses. Are understood? कोई question? Okay. Saptarishi, any questions? No. Okay, so now we are going to understand that what are its features. So first one is subjective. So it means this is the person belief we are talking about. ठीक है? Okay. Now when we talk about this, क्या बात हो रही है कि religious experience जो experience होता है, this is completely what? This is personal, right? Influence is there, no doubt, right? As we are grasping this knowledge from outer sources, right? We can say, can you say this is manipulation, a kind of manipulation? If we are like reading, if we are understanding, we are taking someone's belief, is it manipulation? We consider it in both the ways also. When we talk about religious practices, as we see, they are very subjective and very personal. So some people just put their own faith in it, which has come from their generational beliefs also. And you know, when we deep dive into it, at one point of time, we might feel this is manipulation also. So there can be either ways. How will you define this word? Religious. Of manipulation. Somebody forces you to follow a thing, or somebody gives you a bad opinion on a thing and prompts you to do it. Okay, you said when someone's give you some bad things to follow it? Bad or good? Okay. Okay. Basically their opinion. Okay, so someone is giving their opinion. What else? Anything else? Okay, manipulation is when someone is trying to, implement their beliefs on you, right? Because of their own advantages, because of advantages. Okay. Now, when we talk about manipulation, okay, manipulation उस sense पर होता है when you do not have proper knowledge, ठीक है? तब manipulation हो सकता है, right? But when we talk about these kinds of things, if you are like talking about religion, right? Manipulation एक extent तक हो सकता है, right? But अगर हम religious beliefs की बात कर रहे हैं, तो it takes process, there are steps, ठीक है? So manipulation cannot be done in these phases. Okay. Saptarishi, what do you think about this? I think regarding religious experiences, the matter is not totally manipulation, but it is more influencing part. Like someone is actually influencing. It can be negatively or positively, but the aspect is influencing, not manipulating. Okay. जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे subjective की, so what we are understanding कि we are talking about this thing happening inside our mind, inside our heart, ठीक है? So it means other people, right? You cannot see it directly,
ठीक है ना, तो तुम इसे डायरेक्टली सी सकते हो, मतलब अदर पीपल कैन नॉट सी डायरेक्टली एंड दे कैन नॉट इवन वेरीफाई इट, ठीक है, those beliefs are totally your beliefs, no one can basically measure it also, ठीक है. So what this is telling to us that it is totally based on individual consciousness, right? This is going to be based on your consciousness, not on my belief, not on my verification, ठीक है. It cannot be objectively tested, जैसे कि साइंस में होता है, इसको टेस्ट भी नहीं किया जा सकता है, right? For example, if someone says that I felt God's presence, right? So you cannot prove it, right? Because it was very personal, right? And according to that person, it is going to be 100% real, right? According to me, I can like have different diversification, but for you, it will be like 100% true, ठीक है. Now, if we talk about religious experience, tabhi we are saying that this is subjective, and for that person, it is like valid 100%, ठीक है. And not only that, it is valid with reasoning also. Even he is taking those beliefs what with reasons, okay. Now it is infallible, matlab right always. not right always, not good always. What else? Saptarishi. Yes, sir. So basically means it is like something that is too good to be expressed in words. Like as the religious experiences are more personal and subjective, and it is actually when someone is making one with the ultimate reality, it is too big or too vast to be expressed in mere words to others. In a sense, it is inapplicable in a certain Exactly. So sense. something which we cannot express in words, right? So as William James also says, sometimes there are so many like experiences which we cannot explain in words, right? So that experience is totally what? This is subjective experience we are talking about, right? So these are infallible. So it means no words can fully describe the experience, right? So it's like that if you are saying that I felt deep peace while while talking about this or basically sharing all these things, right? So that is ineffable. You cannot express it, right? You are just feeling it, right? So that is intense love we talk about, ठीक है. So if we talk about this religious experience भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, but person basically try to explain it, right? But they always says that it was something that was beyond words, right? You cannot have explain it like with words, right? Now after this, another important part, that is transformative. Transformative matlab it is going to change you, right? So something or someone that you were like in other portion, okay, now you are a different person, okay, because it is bringing out different changes on you, right? Thinking भी change हो चुकी है, behavior भी change हो चुका है, process is also changed, right? So this is transformative portion we are talking about. So religious experience is that kind of thing, okay. Now if we talk about philosophies जहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, right? If we talk about Buddha and a normal person, we read this theory है ना, बुद्धा की theory पढ़ी है ना, तो what are the transformation we'll see in Buddha and normal person? Okay. Following peace, non-violence. और कुछ? ओके गुड, ठीक है. तो यहाँ पे क्या मिला, दैट इवन इफ द एक्सपीरियंस इज शॉर्ट, राइट, इट इम्पैक्ट विल बी लास्ट लॉन्ग, ठीक है. दिस इज द फीचर दैट वी हैव अंडरस्टूड, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव, अंडरस्टूड. नाउ आफ्टर दिस वी हैव न्योटिक. न्योटिक मतलब व्हाट? न्योटिक, जस्ट गिव मी डेफिनेशन. Saptarishi, what is न्योटिक? Just definition. Neotic is Neotic is basically like I mean it actually related to intellect or reasoning, something like that. I mean it is actually our mental activity that is working on regarding this religious experiences that we do. As this is personal, so it is very much related to our mental activity that we do, or our intellectual activities or our reasoning thinking process. Okay, when we talk about Neotic, it means it is giving us deep knowledge, right? And it is giving us insight as well, okay? But we are not getting through this only from books, okay? Book knowledge की बात नहीं हो रही है, but we are talking about what? We are talking about direct realization. We are talking about truth. That is what? Subjective, okay? Totally and totally based on your things, right? So that experience we are talking about, okay? As William James says that it gives insight into depths of truth, okay?
So for example, you suddenly realize that everything in life is connected. Okay, this ego is illusion, right? This world that you are basically practically having is nothing but just Maya, right? So this realization is what? This is neurotic. Okay, समझ आया यहाँ तक? So it's like feeling that now I finally know the truth, right? Even if you cannot explain it properly, but you have the truth, right? So with that truth, this is subjective, ठीक है? और subjective के साथ साथ में infallible भी है, right? Transformative भी है और उसके साथ साथ में neurotic भी है. These are the features of religious experience. Got it? तो subjective का मतलब क्या हुआ? That you know only the person can feel it. Infallible का मतलब हुआ that I don't know how to explain it, but you know everything felt basically one, right? And after that transformative मतलब ego भी reduce हुई है, anger भी reduce हुई है, right? Your changes you are seeing in, ठीक है? उसके साथ में neurotic का मतलब क्या है? That person feels that this is the ultimate truth, right? And the reality is one, non-dual reality नहीं है, सिर्फ एक ही reality है, right? So these are the features. Understood? कोई question? Any question? Okay. So we have read like half of the portion, ठीक है? Indian philosophy का. So everything is one. किस किस का concept है Indian philosophy में? Who believes in this concept? Arya. Good. Okay. Indian philosophy. Spinoza नहीं. Okay. ठीक है, तो मतलब these people believes what कि अद्वैत वेदांता वगैरह आत्मा जो है ब्रह्मा का ही रूप है, right? These are one thing, right? नॉन डुअलिटी वाले फीचर्स पे बिलीव करते हैं, नॉन डुअलिज्म पे बिलीव करते हैं, right? And according to William James also we have understood कि there is a mystical state जहाँ पे you know opposite direction disappear, right? Where everything, where you basically unity is felt, ठीक है? कि सब कुछ क्या है, एक ही है, right? So this mystical experience, this religious experience often involves what? The sense of unity with the universe, right? That we all are connected, ठीक है? Diverse कुछ नहीं है, right? So the same concept that Indian philosophy have, G.M. Williams also have the same, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो I think Madhava and Nagarjuna were criticizing the theory of Shankaracharya of non-dualism. They are saying that there is a concept of dualism, that soul and God is different. They agreed to this that they have like the same concept, लेकिन उनका जो बेस था that was different, ठीक है? इनका different जो है इंडियन फिलोसफी में एक बार मैं दोबारा से करा दूंगी उसके साथ में टेबल के साथ, ठीक है? So what did we understand from this? कि religious experience क्या है? Personal है हमारा, subjective, beyond language is infallible, right? Transformative है that it is basically bringing changes, right? And truth revealing है that it is neurotic. So these are the features that we have of religious experience. Any question? Anything that you want me to repeat? Understood? Yes, Arya explained subjective, Harshit explained infallible, Saptarishi explained transformative, and then Arya explained neurotic. Quickly, very quickly. Here we are talking about the three features of religious experience, in which there are four kinds, which is subjective, infallible, transformative, and neurotic. Subjective is something which is experienced as a personal or an individual. No other person can see or feel it directly. It is based on an individual consciousness, and with for that individual, that experience is valid as well as its reasoning for that individual. Next. So we are talking about the second feature, ineffable, which means cannot be expressed completely and which is beyond words. For example, if we consider a feeling which we cannot express with words, but we can definitely tell that we felt it. It is like similar to subjective and also very personal. Next. Yes. So basically, religious experiences are very transformative as it actually makes our life upside down because it actually comes all of a sudden because it is very personal. So it actually creates a transformative effect in our mind as well as in our life, as experienced by Buddha, Gautam Buddha, Siddhartha, who later became Buddha after getting enlightened, or actually experiencing this religious experience that he experienced that actually helped him to get nirvana. So in essence, religious experiences has a transformative nature. One of the main features of this experience. It is the fourth feature of religious experience, which says that it is getting a deep knowledge and insight of God. And here
the people realize and they have inner realization, that is direct realization of knowledge, from which they get to know that there is no concept of non-dualism. They feel that the individual and the God is one, and it is kind of mystical experience they get. ठीक है. Okay, यहाँ तक कोई डाउट है? No. Did I give you any question last class में? Okay, now let's move to another thing. Nature versus object. Nature, how experience occur. Object, what is experienced. ठीक है, किसके बारे में बात होगी यहाँ पे? Any idea? Prakriti and Purusha, I can say, like. Okay, when we talk about nature, we'll be discussing कि character क्या है और process क्या है. ठीक है, religious experience का, right? So it means that how experiences are occurring to us. ठीक है, उसके बाद में object की बात करें तो मतलब we are talking about what? हम लोग यहाँ पे reality की बात करेंगे and entity की बात करेंगे, right? That what is experience. ठीक है, यहाँ पे how experience occurs and then object will be what is experienced, right? Now if we talk about nature of religious experience, तो nature का मतलब होता है that how this experience occurs and what it actually feels like, right? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो है immediate. If we are talking about immediate, मतलब direct experience है, right? As I told you कि ये क्या है, subjective की बात हो रही है यहाँ पे, right? So this is the direct experience that only you are having with, ठीक है, तुम्हारा truth वहाँ पर है, तुम्हारा belief है, तुम्हारे reasoning है, right? So यहाँ पे अगर हम बात करें religious experience is immediate, ठीक है, कोई mediated नहीं है यहाँ पे, this is the immediate experience, ठीक है, this is not happening through senses या फिर किसी reasoning के साथ में नहीं हो रहा है, ना यहाँ पे senses का involvement है, ना ही यहाँ पे reasoning का involvement है, right? The only two things here are the truth and you, ठीक है. Now when we talk about this, यहाँ पे basically you don't infer God, you are experiencing it directly, ठीक है. जैसे कि आप लाइट को देखते हो, right? जैसे कि आप basically सोचते हो लाइट के बारे में, the same thing is happening, right? There is no mediator, only you and that experience is happening, ठीक है. उसके बाद में intuitive होता है ये, that it is not rational. I will explain this, that it is intuitive. Harshit. For example, if you look at the nature, it's about to rain. You get the smell of the rain, the petri shore. That is basically intuitive. You can tell that it is going to rain. Good. Good. It is based on what? मतलब logic पे और reasoning पे, हाँ, reasoning पे base होता है, right? मतलब एक sudden insight होती है हमारे पास में, right? Intuition होती है, right? So religious experiences, integral intuition we are talking about, ठीक है, हमारे अंदर की वो चीज है, right? This is something that we can also say कि feeling है, right? That is based on logic and reasoning. अब हम logic और reasoning की बात करते हैं, they also based on the past experiences also, right? Connection of knowledge is there, right? तो different things, sources आती है, एक हमारी past knowledge से आती है, right? So with that logic and reasoning is coming to us. मतलब यहाँ पे emotions भी होते हैं, emotions are also there, intellect भी है, and there is will also, ठीक है. तो इन सब का कनेक्शन क्या बनता है? इंट्यूटिव. अंडरस्टूड? अरे गॉट इट बच्चा? ओके, आफ्टर दिस इज मिस्टिकल. नॉन डुअल है, अभी समझाया क्या है रे? The God and the soul are same. Okay, so it means unity and that loss of duality is seen over here, ठीक है. मतलब there is no distinction between subject मतलब self and the object between मतलब God या फिर world, right? These are the connection we are talking about. एक ही चीज है, right? तो this is the place जहाँ पे like there is no one but the connection, ठीक है, that everything is one, right? This concept comes up, ठीक है. उसके बाद में ineffable है, that it is beyond words, अभी समझाया, ठीक है. We cannot basically explain it, but experience कर सकते हैं हम इसको, right? Neotic है, neotic मतलब it is giving knowledge to us, ठीक है.
उसके बाद में हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेटिव है, बेसिकली यू आर सीइंग व्हाट चेंजेस राइट इन योर पर्सनालिटी, इन योर लाइफ, राइट, एंड दिस इज लीडिंग टू व्हाट, यहाँ पे मोरल ग्रोथ हो रही है और उसके साथ साथ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, राइट। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल बट इंटरप्रिटेटेड डिफरेंटली, मतलब क्या यहाँ पे, यूनिवर्सल बट इंटरप्रिटेटेड डिफरेंटली मतलब It basically means like as it basically means that the religious experiences are very much universal or is similar, but as our the human knowledge is very much limited, so this experience is very much interpreted differently by various cultures, religions, uh, and language and all. So basically, it is interpreted differently in all around the world because human knowledge is very much limited in nature. So we can't comprehend the whole holistic picture. So we understand a part of it. Every culture actually understand smaller part of the whole truth. So in a sense, we this experience or religious experience is interpreted differently. As a result, it is universal in nature, but it is actually interpreted differently. ओके यहाँ पे क्या होता है, एक्सपीरियंस सिमिलर, ठीक है, इमेजिन करो हर एक किसी का सिमिलर एक्सपीरियंस है, राइट, बट इंटरप्रिटेशन अलग होती है। जैसे कि हम लोग बात करें, हिंदू में ब्रह्मा इज देयर, राइट, क्रिश्चियन में गॉड इज देयर, इस्लाम में अल्लाह इज देयर, राइट, सो इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट जहाँ पे बोलते हैं ना रिलीजन एक ही तो बात करते हैं, राइट, सो द सेम फीचर इज ऑफ यूनिवर्सल बट दे आर इंटरप्रिटेटेड डिफरेंटली, ठीक है। सो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड कि रिलीजियस एक्सपीरियंस जो होता है इमीडिएट होता है, इंट्यूटिव होता है, मिस्टिकल होता है, राइट, इनफेबल है, नोएटिक है और उसके साथ साथ में ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। अंडरस्टूड, नेचर समझ में आ गया। आर्या, व्हाट आर द नेचर, कौन कौन सा है, एक्सप्लेन फर्स्ट थ्री। So, nature is a character or a process by which we get the realization of religion. Like the first one is immediate, like direct experience of God. There is no involvement of senses or reasoning. It is not a rational, it is emotional. It means it is based on emotion, intellect, and will also. And second one is mystical, which says that non-dual, which is in character is non-dual, and it says about unity. Like there is no difference between God and us. And everything is a part of God. And infallible means cannot explain in the words that experience, which is experienced by an individual, but cannot be expressed in the words of to others. Okay. Next. Immediate includes senses or it doesn't include senses? No, it doesn't include senses. अगर senses include है मतलब mediator is there ना, फिर तो there is no mediator, कोई भी mediator नहीं, just you and it's just the God, ठीक है, world. Yes. Next three you, Harshit. Three features are ineffable, neotic, and transformative, and universal. When it comes to ineffable, it cannot be expressed, but it can be felt. And then going on to neotic, it is which gives us deep knowledge. It is the ultimate truth, the direct knowledge, which begins with non-dualism. And it is like a kind of transformative, which helps us change ourselves. And universal. Universal is like seen by everybody, understood by everybody, but the interpretations of different people are different. For example, as we talked about religion, different kinds of religion. Saptarishi, first three. Yes, ma'am. So basically, the nature of religious experience is very much immediate, as it is very much direct. There is no mediator in between, so it is sudden and it is direct in nature as well as it is personal. And then there is this intuitive nature to it. It is not rational. It very much depends on our emotions as well as intellect. So in essence, this actually is noetic in nature because our intellect or our emotional state actually directs toward these experiences. And in most of the cases, this is rational, but it is emotional in nature. And there is this idea that it is very mystical because this mystical experience when we become one with the higher reality or the ultimate truth that is. So in a sense, there is a union between Atman and Brahman. So non-dual nature actually exists. So in a sense, this is a mystical experience that can't be explained using science or logic. So this has a mystical nature in itself.
ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस की। ओके, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बात करेंगे, सो दिस इज द प्लेस जहां पे फिलोसफर्स जो है ना बहुत ज्यादा डिसएग्री करते हैं एक दूसरे के साथ में, राइट? सो ऑब्जेक्ट इज व्हाट दैट व्हाट इज एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो एक्सपीरियंस क्या है, राइट? वी अंडरस्टूड की नेचर क्या है, वी अंडरस्टूड व्हाट सब्जेक्ट इज, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑब्जेक्ट इज, राइट? सो ऑब्जेक्ट इज द अल्टीमेट रियलिटी। इट मींस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर इंडियन फिलोसफी में बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रह्मा ओवर हियर, राइट? दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, सो अबाउट दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, राइट? अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर, ठीक है, जैसे राधा कृष्णन की बात करें, राइट? सो दे से दैट रिलीजियस एक्सपीरियंस रिवील्स ब्रह्मा। ठीक है, वो अल्टीमेट इनफाइनाइट रियलिटी को रिवील करते हैं, राइट? और क्या क्या फीचर्स है इनके, वही इनफाइनाइट है, अटर्नल है, नॉन डुअल है, राइट? एंड बियॉन्ड एट्रीब्यूट्स इट इज, राइट? सो अकॉर्डिंग टू देम आत्मा इज व्हाट? आत्मा इज ब्रह्मा। ठीक है, सो अगर आप रियलाइज करते हैं व्हेन यू आर हैविंग मेडिटेशन, राइट? व्हेन यू आर डूइंग मेडिटेशन, कोई वहां पे मीडिएटर नहीं होता है, राइट? इट्स जस्ट यू, राइट? योर बेसिकली विल, योर ट्रूथ, राइट? एंड यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, राइट? बस जो भी तुम फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग टुवर्ड्स दैट रियलिटी। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द वेस्टर्न व्यू आल्सो। अच्छा, इंडियन फिलोसफी का मैं समझ में आ गया। व्हाट डू यू थिंक, इज वेस्टर्न फिलोसफी डिफरिंग फ्रॉम दिस या फिर सेम ही है? मस्ट बी सिमिलर, कैसे, किस क्राइटेरिया में इट विल बी सिमिलर? ओके, सप्तऋषि। Yes, sir. So in certain cases it might be similar, but some other cases it might be different regarding who is actually talking about. Like Spinoza believed that nature and universe are the same, God are the same. So basically, it actually relates with the Advaita Vedanta. We are part of Brahma. So the object is Brahma or the nature. But if we go to Catholic philosophers or some philosophers who are Christian, which means like Saint Augustine or Thomas Aquinas, they actually believe that God as a separate entity uh, who is actually guiding us toward salvation. So in a sense, it is little bit different from the idea of universe as well as nature. So as well as Descartes, if I talk about Descartes also actually believed in some entity as a universal entity. So in a sense, it is actually differs from philosopher to philosopher regarding who is actually expressing his viewpoints. It differs. And what do you think, Arya? Now, according to Penn, Hmm. there is a dualism. Like they say that soul and God is different, but according to pantheism, which is given by the Spinoza, he says that the nature is God. So yes, there is some philosopher who agreed with the who is similar to the theory of Indian philosophy, but some are not. ठीक है, सो यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया है कि रिलीजियस एक्सपीरियंस इज द एनकाउंटर विद द पर्सनल गॉड ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्टिव की बात की है अगेन, जैसे इंडियन फिलोसफी में बात की थी, राइट? सो व्हाट दे आर टेलिंग टू अस दैट गॉड इज सेपरेट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट दिस, मतलब उस ह्यूमन बीइंग के पास में विल है, राइट? एंड दैट हैव लाइक पर्सनालिटी आल्सो। ठीक है, तो रिलेशनशिप एक डिवोशन का होगा, एक वर्शिप का होगा, राइट? एक ओबीडियंस का होगा। दिस इज व्हाट वेस्टर्न फिलोसफर्स बिलीव, राइट? तो मतलब there is like feeling of God's presence in prayer, right? उसके साथ साथ में you are hearing that divine guidance। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे बोला है that ब्रह्मा में बोला है कि ब्रह्मा is the ultimate reality और उसके साथ में connection is there, right? So they are the one ultimate reality we are talking about। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी में अलग अलग व्यू पॉइंट दिए गए हैं, right? Like most of the philosophers disagree with this idea कि this is one criteria we are talking about। ठीक है, वो बोलते हैं they are separate, जैसे कि डेकार्ट्स ने दिया था, right? माइंड और उसका दिया था, right? So this is how they, like Western philosophers, understood कि divine is the one who is giving us obedience, right? Is we are the one who are hearing and he is giving us the rules and regulations। ठीक है, अब उसके बाद में बुद्धिस्ट व्यू की अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? निर्वाणा। ठीक है, नॉट गॉड। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? निर्वाणा ऑब्जेक्ट है, राइट? मतलब कोई पर्सनल गॉड नहीं है, फोकस किस चीज पर है? एंड पे, राइट? सफरिंग खत्म करने के लिए और एनलाइटनमेंट रीच करने के लिए, राइट? अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल व्यू में तो ऑब्जेक्ट इज नॉट रियल एक्सटर्नल एंटिटी। ठीक है, फोकस क्या करते हैं वो लोग? बेसिकली इल्यूजन पे, जैसे कुछ फिलोसफर्स है जो फ्लूइड जो फोकस करता है इल्यूजन पे फोकस करता है, राइट? तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इल्यूजन हुआ, राइट?
नाउ वी हैव विलियम जेम्स जो फोकस किस चीज पर करता है, एक्सपीरियंस इटसेल्फ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते हैं, राइट। तो हर एक फिलोसफर का अलग अलग ऑब्जेक्ट है, राइट। सो गॉड इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इन एवरी थिंकर्स माइंड, अंडरस्टूड? ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट इज द ऑब्जेक्ट रियल या फिर सिर्फ मेंटल है? व्हाट डू यू थिंक? इज द ऑब्जेक्ट रियल? It is very much related to our minds, how we want to feel the world. So it actually depends on our mental space or how our mind works. We discussed that it's subjective and personal, so it must be mental. Okay. Huh. And like we cannot see or touch it. It's mental. सब मेंटल है, तो फिर जो ऑब्जेक्ट जो हम ब्रह्मा पढ़ रहे हैं इतने टाइम से, दैट्स नॉट रियल? Those are all the theories given by these mentalists. ओके, यहाँ पे भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। अगर हम रियलिस्ट व्यू से समझे तो यही कि जो फिलोसफीज, बुद्धिस्ट की फिलोसफी हो गई, राइट। सो दे बिलीव कि ऑब्जेक्ट इज रियल, ठीक है। यहाँ पे गॉड और ब्रह्मा की बात की गई है, राइट। तो एक्सपीरियंस जो है वो हमें रिवील करता है ट्रूथ को, ठीक है। अब अगर हम बात करें एंटी रियलिस्ट व्यू की, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट जाते हैं। वो क्या बात करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है माइंड में, दिस इज द मेंटल थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो एक्सपीरियंस क्या है? इट्स प्योरली साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो इस वे में डिवाइड किया है। अब अगर हम बात करें एवोल्यूशन की, तो इसी डिवीजन के बेसिस पे हम लोग आगे की वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कि एवरीथिंग इज वन, तो हमारा नेचर क्या होगा? मिस्टिकल है, राइट। उसके साथ साथ में नॉन डुअल है, इनफाइबल एंड इंट्यूटिव है, राइट। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें इंडियन फिलॉसफी में क्या है? इट इज ब्रह्मा, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, राइट। अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी में बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिटी विद गॉड, ठीक है। बट देन अगेन वेस्टर्न में ये डिवीजन है, राइट। सम बिलीव इन दिस एंड सम डू नॉट, ठीक है। समझ में आया सप्तऋषि? Yes, ma'am. Arya, what did you understand from this? Object of religion experience is that what is actually a person is experiencing. Object means the ultimate reality, which is in Indian philosophy, philosophy is Brahma, where Radhakrishnan says Atma is Brahma. We can achieve it from meditation, where there is our will, our truth, and with help of no senses, we get our inner realization, we have inner knowledge, and then we can achieve the liberation, which get closer or which become equal to Brahma. But in Western philosophy, they say they do not agree with God and soul as a unity. They mainly focus on the dualism. They say that God is someone who is worshipped by human, but they are not believing in the concept of unity. And in Buddha, they are focused on nirvana, which is inner knowledge of a person, which comes by meditation or and the philosopher William says that experience itself. He is believing that everything which can be experienced by itself is a real. He is not accepting the concept of object. Okay. Yes, Saptarishi. So we are actually understanding the objects or the experience that one get when they are when one experiences these religious experiences. So in a sense, it actually differs from Indian philosophy to Western philosophy. Indian philosophy is really focused on Brahma and how we can actually be one with the ultimate truth or the ultimate reality that Brahma. When we do so, we actually experience the bliss or Satchidananda Bhava. Our Atman becomes one with Brahma. So in a sense, this is a way of getting liberated. So the object that we experience or we actually gets the taste of is the Satchidananda, the bliss, through uniting with Brahma. And in case of Western philosophy, it really depends on how the philosopher is actually viewing the world. Like Christian philosophers actually more mainly focused on how we can see the true version of God or the
supreme deity or entity that they believe in, as well as Descartes actually talked about mind and body separately. So in a sense, they actually viewed soul and mind and God as separate entities, some of them as well. But in case of Spinoza, he viewed nature and God as one only. So which very much relates with Indian philosophy, Advaita Vedanta. That is, so this is the idea that various philosophers expressed view quite differently regarding this idea that what we actually experience when we one actually have this religious experience. So this idea that is it real or is it in only in our mind, it actually also differs from philosopher to philosopher. Some philosophers emphasize on the reality, that is this experience is the reality, and the other thing that we see around us is just the illusion or maya. But others say that whatever that is also real, and whatever we experience this is also real. So in essence, there are some different viewpoints regarding how this object works or what this object is. Okay. Okay, if you have to like define peace, how will you define it? Like we have understood the definition of it, like through the happiness as well, है ना? Utilitarianism तुम्हारा favorite concept, right? So we have understood like what Indian philosophy says regarding this, what Western philosophers says. So how will you define it? Neutral feeling, no anger, no excitement. If there is no anger, no excitement, so emotionless. So that's peace. Peace is like which causes no suffering. Okay. ठीक है. Yes. Saptarishi. Yes, ma'am. So I think this is the removal of expectation and greed, as well as jealousy, but it is related to it. So I think that peace is when a person is actually free of expectations and greed regarding his situation or life he lives or she lives. So how you'll get peace, Saptarishi? Uh, One can get peace, I think, when someone is don't have this materialistic expectation from life, like a goal that I have to gain this much wealth or I have to do this work and I have to be this successful to achieve something. These expectations actually makes our mind volatile, and this actually throws us toward more chaotic emotions like greed, anger, jealousy. So if one removes these parts from one's life, I think one might get peace. You philosophy students like you'll behave so ethical, है ना? कि हमें तो greed नहीं चाहिए, हमें power नहीं चाहिए, हमें money नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, and then you guys are preparing for UPSC. Well-being के लिए तो नहीं कर रहे हो, पूरा society के लिए तो नहीं है. With power comes responsibility. You know, manipulative answer. Not manipulative, but that is true. So you are working, like you'll be working in UPSC for? Police service. But पता नहीं आजकल IAS करने का मन कर रहा है. Trend चल रहा है. Not trend, man. Like one day मैं सुबह उठ के I was about to go for a run. हाँ. मैं road cross कर रहा था, like Karol Bagh से Olga से. It was a highway. बीच में highway है ना. And suddenly a girl started running and she started crying. And there was somebody in front of her and she came running. भैया बोलो वो किधर गए? I think somebody robbed her belongings or something. And I mean her phone, I guess. अभी मेरे पास phone भी नहीं है. And she started crying. And you know, after that, it was like, why is all this happening? I was just walking and crossing the road, and I started thinking, why is all this happening? क्यों होना है ये सब? Like, how do I contribute to put a stop for this? It's a good thought. It's a very good thought. Good. See, you're going to see so many things, right? That will, I won't say force you, but will make you think that we should, you could have done something else for the society, right? And you get chances also, but make sure that you are with your these, willingness also. उसके साथ में you are with etiquettes, with morality, with compassion. ठीक है, जितने ethics के keywords ले सकते हो, you are basically moving with it, right? But when I say like about this journey is a very long journey, right? So make sure that you are not losing yourself.
ठीक है, इस चीज में यू आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम दीज थिंग्स व्हिच आर कीप यू होल्डिंग विद इट, ठीक है. अब as you told me this incident, right, so it made you think to something bigger, right, so make sure that you are holding to it, ठीक है, क्योंकि this is the motivation that is keeping you to move with it. Good. तो फिर क्या सोचा? कुछ नहीं मैम, फिर मैंने ब्रेकफास्ट करा, फिर उसके बाद हो गया. It's still in your mind, ठीक है. पर ऐसे तुम अगर डिसीजंस चेंज करते रहोगे with one incident, two incident, so don't you think you are not static toward your goal, and it's not a good thing? अप्लाई करना है तो वैसे भी फर्स्ट प्रेफरेंस पे आया है फॉर मेनी पीपल. जब आया फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा तब यू विल वर्क मच हार्ड, क्योंकि आया बनना इज नॉट सो इजी. यू हैव टू गेट देयर 50 और सो, then if you are 800 below that. So okay. Anything else you want to share? Okay. After this, let's understand nature of religious experience. ठीक है. So when we talk about religious experience, this is not just feeling we are talking about. ठीक है. Philosophy में, especially अगर हम Indian philosophy में बात करें, we are not talking about only experience. ठीक है. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रीजनिंग की भी, लॉजिक की भी, राइट. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डिसिप्लिन्ड इनर जर्नी की, राइट, एज वी हैव सीन इन बुद्धिज्म आल्सो, राइट, वी हैव सीन इन जैनिज्म आल्सो, राइट, जो कि हमें एक अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, लिबरेशन की तरफ लेकर जाता है, राइट. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे इनर रियलाइजेशन की बात करते हैं, राइट, व्हिच इज नोन एज अंतर अनुभव इन इंडियन फिलोसफी, राइट. बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट दैट ट्रूथ इज नॉट आउटसाइड बट इट इज इन योरसेल्फ आल्सो, ठीक है, इट इज विद इन योरसेल्फ, राइट. According to Radhakrishnan, it says that religious experience is integral intuitions, ठीक है, मतलब तुम्हारे इंट्यूशन से आती है ये चीज, राइट. डायरेक्ट अवेयरनेस होती है ऑफ रियलिटी विद द कॉन्शियसनेस, राइट. मतलब यू डू नॉट फाइंड ट्रूथ इन बुक्स, राइट. तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेगा, तुम्हें आउट ऑफ सोर्सेस में नहीं मिलेगा, राइट. यू आर गोइंग टू रियलाइज दिस ट्रूथ वेयर विद इन योरसेल्फ, है ना. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि तुम्हारा जो भी ट्रूथ का रिवलेशन होगा दैट विल हैपन विद यू एंड विद दैट अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है. इसको बोलते हैं अपरोक्ष अनुभूति, मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस तुम्हारे पास हो रहा है, राइट. So what this is saying कि अगर हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, और सडनली यू आर रियलाइजिंग दैट आई एम नॉट जस्ट द बॉडी और माइंड, ठीक है, मेक प्योर कॉन्शियसनेस, राइट. दिस रियलाइजेशन इज द डायरेक्ट एक्सपीरियंस दैट ही इज टॉकिंग अबाउट, राधाकृष्णन इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है. अब उसके बाद दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यहाँ पे बात करी उन्होंने सेल्फ डिस्कवरी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, व्हाट ही इज टेलिंग टू अस दैट इन इंडियन फिलॉसफी वी टॉक अबाउट दिस. पूरा का पूरा जो भी पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग इट विद द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी. उसके बाद विल मूव टू द वेस्टर्न फिलॉसफर्स, राइट. In Indian philosophy, what it says that central question always comes up, that who am I, right? What is myself, right? So there is like different philosophy in this. उपनिषद में क्या बोला गया? तत्वम अपसि, that thou art, ठीक है. सुना है कभी? क्या? ओके, यहाँ पे बोला तत्वम असि, मतलब योर इनर सेल्फ, योर आत्मा इज द अल्टीमेट रियलिटी, राइट. ब्रह्मा से कनेक्टेड है वो, राइट. दैट दाउ आर्ट, राइट, मतलब तुम और तुम्हारा रियलिटी, राइट. ब्रह्मा इज द वन थिंग, ठीक है. तो यू आर द वन हु इज गोइंग टू डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, राइट. यू आर गोइंग टू रिमूव दैट इग्नोरेंस. तुम जब अविद्या को रिमूव करोगे, ठीक है, अविद्या मतलब तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, राइट. That no knowledge concept is removed. Once you understand that what is the true reality, right, then you are going to move towards what? Moksha, right. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि religion experience क्या होता है? This is the removal of all the illusion, ठीक है, and you are gaining something new, right. What are you gaining? You are gaining the realization, ठीक है. You are basically gaining the direct experience in here, ठीक है. अब liberation की बात करें तो ये final goal है religious experience का, right. तो यहाँ पे इंडियन फिलॉसफी जो है हमारी गोल ओरिएंटेड है, ठीक है. गोल क्या है यहाँ पे कि हमारा एम है फ्रीडम लेना, ठीक है. फ्रीडम किससे? ये बर्थ साइकिल से फ्रीडम लेना, राइट. सफरिंग से फ्रीडम लेना, इग्नोरेंस से फ्रीडम लेना, राइट. तो मोक्षा क्या है? दिस इज द रियलाइजेशन, आत्मा इज द ब्रह्मा, है ना. तो नेचर ऑफ दिस एक्सपीरियंस इज व्हाट? परमानेंट पीस लेना, कोई ईगो नहीं होनी चाहिए और कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है. अब मेथड क्या है इसके? तो पहला मेथड हमारे पास में है योगा. योगा कहाँ से आता है? पतंजलि से. We'll be reading this in Indian philosophy in more deep, ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो योगा सूत्र से में बेसिकली ये योगा वाला आता है, राइट. दिस डिसिप्लिन. तो योगा मतलब यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड, ठीक है, जिसको हम चित्तावृत्ति निरोधा बोलते हैं, राइट. यू विल बी रीडिंग मोर अबाउट दिस, जहाँ पे आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो. चित्ता वृद्धि एंड निरोधा, ठीक है. सो यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड एंड देन यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है.
कंट्रोलिंग योर माइंड मीन्स व्हाट, दैट यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड बेसिकली फ्रॉम दीज मटेरियलिस्टिक व्यूज, ठीक है, ये एक्सपीरियंस से, इमोशन से, उन चीजों से आप कंट्रोल कर रहे हो, राइट, एंड योगा प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, ठीक है, आप अपनी बेसिकली थॉट्स को कंट्रोल करते हो, आप अपनी अचीवमेंट्स पे फोकस करते हो, कंसंट्रेशन पे फोकस करते हो, राइट, उसके साथ साथ में डीप मेडिटेशन पे आप फोकस करते हो, राइट, सो दिस इज द डायरेक्ट एक्सपीरियंस दैट यू आर हैविंग विद सेल्फ इन दिस, ठीक है, योगा में, अंडरस्टूड। उसके बाद में मेडिटेशन इज देयर। नाउ व्हाट इज मेडिटेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट ध्यान। ध्यान हमारे पास में दूसरा सोर्स है डायरेक्ट एक्सपीरियंस का, राइट, तो ध्यान का मतलब क्या है, साइलेंट सिटिंग, ठीक है, यू आर बेसिकली हैविंग अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, राइट, सो माइंड है बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स काम, ठीक है, ईगो जो होती है हमारी डिसॉल्व हो जाती है, राइट, एंड हियर व्हाट हैपेंस, यूनिटी इज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, यूनिटी विद whom, यूनिटी विद गॉड, राइट, सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पर होता है, राइट, फॉर एग्जांपल इफ यू आर फीलिंग लाइक एवरीथिंग इज वन, दैट कनेक्शन, राइट, you and that's basically divine reality, that is not separate thing but is the only one reality, ठीक है, ये हमें कहां से मिलती है, ध्यान से, राइट। उसके बाद सेल्फ इंक्वायरी मतलब ज्ञान मार्ग, सेल्फ इंक्वायरी, अब यहाँ पर क्या होता है कि यू नो आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट हु एम आई, राइट, अब अगर हम बात करें रामा महर्षि ने इसको यूज किया था, राइट, एंड व्हाट ही सेज दैट यू हैव टू रिमूव फॉल्स आइडेंटिटीज, कि आपको बॉडी वाला कंसेप्ट, माइंड वाला कंसेप्ट, ठीक है, बॉडी और माइंड वाला कंसेप्ट डेकार्ट्स ने दिया था, है ना, तो वो बोलते हैं इसको रिमूव करो, राइट, एंड व्हेन यू विल रिमूव दिस कंसेप्ट यू विल रीच टू वेयर, यू विल रीच टू प्योर कॉन्शियसनेस, राइट, जहां पे तुम्हें रियलाइजेशन होगा कि यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें एक ही थी, अंडरस्टूड, समझ आया यहाँ तक, ओके। ओके अगर हम लोग बात करें नेचर ऑफ एक्सपीरियंस की, ठीक है, तो सबसे पहले नेचर मतलब कि एक्सपीरियंस होता कैसा है, राइट, तो पहला तो वही ट्रांसफॉर्मेटिव है, राइट, सो दिस इज नॉट जस्ट इमोशनल, राइट, वी आर गोइंग टू चेंज आवर एंटायर बीइंग, ठीक है, पूरा का पूरा बीइंग इज गोइंग टू चेंज ओवर हियर, राइट, दिस इज ट्रांसफॉर्मेटिव, राइट, एज वी आर गोइंग टू चेंज आवर इमोशंस आल्सो, राइट, हमें यहाँ पे ईगो को डिसअपियर करना है, राइट, हमें बेसिकली फियर को रिड्यूस करना है, सो व्हेन ऑल ऑफ दीस इमोशंस आर गोइंग टू बी चेंज्ड, तब हमारे पास में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यू विल बी न्यू यू, राइट, सो राधा कृष्ण ने क्या बोला था, आर्या, राधा कृष्ण ने क्या बोला था इस चीज पे, He says about that Atma is a Brahma, and he tells about meditation, like when we do meditation, there is a true self, there will are true self, and without senses we experience the knowledge. ओके तो क्या समझ में आया कि रिलीजियस एक्सपीरियंस जो है वो बेसिकली हमें मोरल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएगा, ये हमें राधा कृष्ण ने बोला, राइट, ओके नाउ एज वी अंडरस्टूड कि स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल भी है, राइट, सिर्फ इमोशनल की बात नहीं हो रही है, राइट, इमोशनल क्या होती है, इमोशनल होती है टेम्पररी फीलिंग, राइट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल आर व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट डीप रियलाइजेशन हियर, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इमोशंस जो कि आज है कल फेड हो जाएंगे, नहीं, राइट, मतलब परमानेंट चेंज हमें देखने को मिलेगा इन स्पिरिचुअल, राइट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशंस, इमोशंस आते हैं और चले जाते हैं, राइट, एंड इमोशंस आर यू नो सरफेस लेवल आल्सो, और इसके बाद में अगर हम बात करें स्पिरिचुअल की, दिस इज द कोर एग्जिस्टेंस, राइट, दिस इज व्हाई स्पिरिचुअल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, so if you are like going to temple and you are crying there, so this is emotional, right, but if you are realizing that, if you are removing the concept of body, if you are removing the concept of mind and realizing that this is the one unity, right, this is spiritual, right, spiritual की बात करें तो this is the long term we are talking about, ठीक है, permanent है, but अगर हम इमोशनल की बात करते हैं तो वो बेसिकली यू नो फेड होते रहते हैं या फिर नए इमोशंस हमारे पास में आते रहते हैं, अंडरस्टूड द डिफरेंस, ओके, आफ्टर दिस इज नॉन ड्यूअल आल्सो, Saptarishi, what is non-dual? Non-dual basically like the union between the ultimate reality and the self. When the Brahma and Atman is becoming one, it is doesn't have any dual nature. It is non-dual in nature. So in a sense, the union or the inseparable nature of this religious experience when we are becoming one with the ultimate reality. गुड, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि कोई सेपरेशन नहीं है, ठीक है, ना तो सेल्फ में ना वर्ल्ड में, राइट, और उसके साथ साथ ना ही गॉड में, राइट, तो अद्वैत वेदांता बिल्कुल ऐसी थ्योरी बोलते हैं दैट ब्रह्मा अलोन इज रियल, राइट, एंड एवरीथिंग इज वन, सब कुछ क्या है, कनेक्टेड है, राइट, सो एक्सपीरियंस इज व्हाट, दिस इज ट्रांसफॉर्मेटिव और स्पिरिचुअल, राइट, सिर्फ इमोशनल नहीं है, ठीक है, अब इमोशनल क्यों नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट फीलिंग डिवोशनल, राइट, हम लोग यहाँ पे बात करें रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ की, है ना,
तो ट्रांसफॉर्मेटिव क्यों है? क्योंकि चेंज होता रहता है, हमारे यहाँ पे थिंकिंग चेंज होती है, बिहेवियर चेंज होता है, तुम्हारा बेसिकली पर्सपेक्टिव पूरा चेंज होता है, राइट? स्पिरिचुअल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेट रियलिटी जो है वो कनेक्ट होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रह्मा है, अंडरस्टूड, गॉट इट, ओके. Arya explain inner realization, Harshit explains self discovery, and Saptarishi explain liberation. Then Arya explain yoga, Harshit explain meditation, and Saptarishi explain self inquiry. Before that, I want to ask a question. Like the Indian philosophy we are reading now, it's more focused on Advaita Vedanta. Is it? नहीं. I just took example of Advaita Vedanta. ऐसा नहीं है सिर्फ अद्वैत वेदांता ही उस चीज के बारे में बात करता है, राइट? यू विल बी रीडिंग मोर टू दिस. हम लोग वेदास के बारे में बात करेंगे, उसकी पर्सपेक्टिव भी इंक्लूड करेंगे, राइट? डिफरेंसेस इंक्लूड करेंगे. मैंने सिर्फ एग्जांपल में लिया है जस्ट टू एक्सप्लेन द कोर ऑफ इंडियन फिलोसफी. अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है में ये अद्वैत वेदांत ने किया था, और नागार्जुन थे जो और माधव थे, इन दोनों लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया था. दे वर सेइंग दैट कि सोल अलग है, लिबरेशन के बाद भी जो हमारी सोल होती है वो गॉड में कन्वर्ट नहीं होती, वो अलग ही रहती है. और यहाँ पे हम जितनी बार भी पढ़ रहे हैं इंडियन फिलॉसफी, वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन द पॉइंट दैट देयर इज अ यूनिटी इन गॉड एंड अ सोल. So that's why I'm asking. तो those two thinkers said ना कि बाद में होती है, right? So we are considering as a whole perspective, एक नहीं. Like they were saying that after liberation जो soul होती है वो हमेशा ही separate रहती है, वो कभी भी God नहीं बन सकती. पर यहाँ पे तो सोल का कंसेप्ट ही नहीं है ना, यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट रियलाइजेशन का है. वी आर टेकिंग दैट. सबका बेसिक थ्योरी क्या है? दैट देयर इज वन रियलिटी ना. वहां पे हमने सिर्फ सोल की बात की थी. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रियलिटी. ठीक है, हम लोग यहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवाइन ट्रूथ हियर. ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं उसके लिए. दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि डिवाइन ट्रूथ बेसिकली हम लोग मीटअप कैसे करते हैं उसके साथ में, सोर्सेज कैसे होते हैं, वो तो पूरी इंडियन फिलोसफी की चीज को मानती है. समझ में आया? सोल का क्राइटेरिया इज टोटली डिफरेंट. दैट इज ट्रू जो तुमने बोला. So the inner realization in the truth is not outside of individual. It's in you. That is known as the antar in Indian philosophy. Radhakrishnan says that through the meditation, when you suddenly realize that you are not different from the ultimate reality, you are the one, and then you realize that all the things which we are experiencing is materialistic, and there is only one ultimate reality, that is Brahma. This is known as the inner realization. Next. The next topic is self-discovery, meaning avidya, given in a Sanskrit text, Tattvam Asi, which means you yourself is the ultimate truth when you discover yourself. It comes through three paths. First one is Chitta Vritti and Nirudhyan. It is basically yoga. And then B, Dhyana. It is about the meditation. And then C, Gnana Marga. It is the way finding knowledge. Next. Saptarishi. Yes, ma'am. So basically, we are talking about how one can actually, self-inquire regarding after actually experiencing this religious experience that one. So basically, this investigates the root of ego or the self to discover one's true nature and pure awareness. Awareness when someone actually understands one's true place in the reality where one stands. The union, self-realization or self-inquiry leads one to the union with between self and the Brahma, the ultimate reality, to have liberation or actually experience the Satchidananda, the bliss. So, in essence, self-inquiry is the investigation of the root of ego or self after actually going through this religious experience, and this ultimately leads to liberation or let's say union between Brahma and the Atma. Okay, next. What topic is it? Second one. Okay, so the next method is yoga, which is given by Maharshi Patanjali.
He says that with the help of yoga, we can control our mind, our thoughts, which is what the word you said, the Chitta vritti nirodha. Okay, so in this, there is the concept of chitta vritti nirodha. Okay, which is in this, with the help of yoga, we can directly interact with ourselves, by which um, we get peace, and we get a path of liberation, by which we can realize our identity. The next topic is meditation, which basically helps us in improving the spiritual connection with the union. And this connection enables us to find path for the ultimate knowledge and to dwell ourselves with unity. This Saturday I'll take test. So what I'll do, I'll upload the test on the portal. Okay. And where do you live? You live nearby, na? So you can like stay here and write the test and give to the admin office, and then you can submit it to me, right? And online students can submit it to me on the mail ID. Okay. So stay here, write the test, and submit it to the admin team. Okay. So I'll give you 3 questions of 3 topics. Okay. Last में जो 3 topics कराए हैं, prepare them. Okay. And I'll give the question. ठीक है, इसमें से एक case study भी दे दूंगी. 4 questions I'll put. Is that okay? थोड़ा लंबा हो जाएगा. 3 questions चलो. No, it will take a lot of time. So you want me to give 3-hour paper? It is not possible, sir. क्योंकि अभी start किया ना लिखना तुमने, तो it will not be possible to write like in 1 hour like 3 questions. ठीक है? So 3 questions, ठीक है? And I'll give you 1.5 hour. You can write the answers, 150 words each, or maybe 250, depends on my mood. ठीक है, हाँ. उसके बाद में इससे पहले जो कल हमने खत्म किया है दैट, ठीक है, उससे पहले जो खत्म किया है दैट, ठीक है, रिलीजन के दोनों टॉपिक लास्ट के, ठीक है. सो विल बी लाइक, हाँ, लास्ट के 3 टॉपिक्स करते हैं. 3 क्वेश्चंस दे रहे हैं, लास्ट के 3 टॉपिक्स करते हैं, ठीक है. सो व्हाट वी आर डूइंग, लास्ट के 3 टॉपिक्स जो हमने खत्म किए हैं, ठीक है. आई विल बी गिविंग यू 3 क्वेश्चंस, नॉट 150. एक काम करते हैं, 250 वर्ड्स कर देते हैं, ठीक है. मोर भी चेंजेस हैं तो बता दो. नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन यू कि केस स्टडीज कैसे करते हैं, ठीक है. सो नाउ व्हाटएवर विल बी लाइक रीडिंग, ठीक है, टोटली वो उस फिलोसोफर की थिंकिंग पर होगी. सो इट विल हेल्प यू टू इवैल्यूएट मोर एग्जैक्टली आंसर्स कैसे लिखते हैं. इसमें 2 चीजें कवर हो जाएंगी. एक तो केस स्टडी, तुम्हारा एथिक्स का आधा पोर्शन खत्म हो जाएगा. उसके साथ साथ में इट विल हेल्प यू टू एनालाइज दैट थिंकर आल्सो, ठीक है. कितनी बड़ी फिलोसफी को 150 या 250 वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है. उसके बाद में किसी दिन यू नो अब जो भी हम लोग टॉपिक खत्म करते जाएंगे, विल गो विद द एमसीक्यूज आल्सो, ठीक है. चलो ठीक है, आई विल कैरी पेपर विद माई सेल्फ, ठीक है, वहीं पे कर देना, है ना. एनी क्वेश्चन टिल है, कर दिया एक्सप्लेन, अंडरस्टूड अब तक, ठीक है. चलो, न्यूज तो नहीं देख रहे होगे तुम लोग अभी? कब की देखी थी लास्ट? हाँ, देखा था कल. I have to say something. Like yesterday, you were that Pakistan is helping in negotiating. But after the news came, then Iran declined this. वो तो तभी डिक्लाइन कर दिया था उन्होंने कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें. तो उसी टाइम मना कर दिया उन्होंने कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. इट्स जस्ट यूएस इज ट्राइंग टू बाय टाइम, ठीक है. वो सिर्फ टाइम ले रहे हैं ताकि दूसरा अटैक प्लान कर सके. सो विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस. But I like covered that and I discussed that because when it comes to Pakistan being a negotiator is like questionable because of its history, है ना. कह रहे हैं They are following the concept of America. Like America always used to set a narrative of their ideology. Pakistan only following it.
according to me. Hmm. They are trying to set a narrative that they are wanting peace, Hmm. or they are someone who negotiate for social good. That's only they are They just want to improve their global image. ठीक है, जो मतलब उन्होंने नुकसान करा है उसकी भरपाई करने की कोशिश में है, बस और कुछ भी नहीं. War तो चलता रहेगा ना, but there are many more other important standards. Like? War अभी तो time based. Hmm. Because the other news I have recently heard is the International Olympic Committee Hmm. like they're restricting transgender women from participating in. This issue is going for very long. क्या ये transgender वाला तो it's like, especially athletes में, right? And there is not a single rule which can define it exactly, right? And because of this, women, right, who are actually women, they are like facing like lots and lots of problems, and it's very like concerning also, right? Because physically women cannot match men, right? There are like different reasons to it. Science is involved in this, right? तो अगर उस basis पर अगर हम कर ही रहे हैं तो rules should be changed, है ना? What was the news? And also, there was this test called SRY gene test. Hmm. It says that basically, if when these women get tested Hmm. in the labs, if there is a Y chromosome in them, Hmm. so they won't be allowed to play. Yeah. And also, अभी appropriation bill consolidated fund ये सब भी हुआ था इंडिया. Do you think it is going to be changed? Do you think it is going to be changed? Regarding the bill, Yeah. change तो हो ही गया ना. नहीं, like society will change. Regarding this perspective कि नहीं involve होना चाहिए transgenders को, right, with this XY chromosomes. Is it Not debatable, man. बोल रहे मैम religion की बात करवा लो, but this is more sensitive than that. I can talk about Hindu and Muslim, but talking about XX chromosome and XY chromosome is much more difficult. Current affairs. Also science. With biology से you may expect chromosome का questions. हाँ. Hmm. For me, that is more important than this war वाला thing. War वाला thing, you know, like दुबई में वो जो गैस पाइपलाइन का ब्लास्ट हो गया. वो हर दिन होता ही रहता है कुछ तो. Don't you think you're generalizing this, that it like happens each and every day, and now it will like go on for like months also? No, it's like it's been a month almost for now. Like 28 से चालू. बोर हो गए इस दिन से. Not bored हो गए, but that is that is like covering up more major news. यूपीएससी ने लोकेशंस पूछी ना कि कहाँ पर अटैक हुआ था, तो बोला अच्छा ये तो रह गया. That will all get covered. ठीक है, start reading news. आर्य. सुन रही हूँ मैं 10 दिन से पिछले. Saptarishi, do you want to say something to this? I mean, this case of the case that happened recently regarding Olympic and how female athletes should be treated as. So I think it is right, but there are some problems regarding there are certain type of there are females who have higher level of testosterone, and if they are not allowed to participate, then it goes against their right. But yes, but the transgender element, like some man is like transforming to woman and then participating in female sport, this sport will not be done. And I think that in case of Olympic, there should be another category for these participants who are not participate in the female category. They should be allowed to participate in their own category if possible, because this sport should be inclusive in nature, not exclusive. So I think there should be more categories to more sports events that these athletes who are athletes who are disqualified from participating in uh, female event, because okay, absolutely female athletes can't compete with them because of their testosterone level as well as their uh, body physical abilities. So these athletes who are disqualified, they should also be provided with their own version of Olympics or a sporting event that they can also showcase their abilities. So I think this would be more uh, inclusive approach to this sporting world or sporting events. Good. Okay. Where is Srinidhi? Saptarishi, any idea? No, I don't have any idea. Okay. So अद्वैत वेदांता की फ्यू थ्योरी में पता है, राइट, उनका रिलीजियस एक्सपीरियंस के बारे में, राइट, एंड
as Shankaracharya says about duality, ठीक है, द्वैता के बारे में बात करते हैं, मतलब द्वैता is what? द्वैता is duality, ठीक है, A का मतलब होता है यहाँ पे not, right? तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? That we are talking about oneness. What? I thought Advaita is his surname or something. अद्वैत वेदांता, आदि शंकराचार्य, ने मिक्स कर दिया उस चीज को. Good experience. Advaita means not dual. हाँ, non-dualism, non-duality. No, it's not. No, it's not. Welcome to philosophy. Okay, so here we are understanding what कि आत्मा क्या है? आत्मा is Brahma, right? So आत्मा क्या है? आत्मा is the individual self we are talking about. ब्रह्मा क्या है? Ultimate reality. So ये दोनों की दोनों same है ना? मतलब यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है. You and universe are the one thing. ठीक है. अब नेचर की बात करें तो only one reality exists, that is ब्रह्मा. ठीक है. ब्रह्मा एग्जिस्ट कर रहा है मतलब तुम एग्जिस्ट कर रहे हो because they are the one thing, one process. ठीक है. Which is infinite, eternal है, unchanging और pure consciousness है, right? उसके बाद में अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड appears separate, right? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस. ठीक है, ये अविद्या की वजह से है, माया नहीं अविद्या. ठीक है, रिमेंबर दीज वर्ड्स. अविद्या होती है लैक ऑफ नॉलेज. माया इज व्हाट? इल्यूजन. तो ब्रह्मा क्या है यहाँ पे? ब्रह्मा इज रियल एंड वर्ल्ड इज अपीयरेंस टू अस. ठीक है. अब रिलीजियस एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस. ठीक है. अद्वैत में क्या है? रिलीजियस एक्सपीरियंस क्या? दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ वन डुअलिटी, राइट? ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ. ओके, अब ये रियलाइजेशन होगी कैसे? अगर हम इस रियलाइजेशन की बात करें तो पहला हमारे पास इग्नोरेंस मतलब अविद्या. तो इनिशियली वी थिंक कि हम लोग क्या है? वी आर द बॉडी, आई एम द एक्सपीरियंस, राइट? आई एम सेपरेट थिंग, राइट? दिस इज हाउ वी थिंक. ठीक है. अब उसके बाद में नॉलेज, ज्ञाना. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नॉलेज मतलब थ्रू स्टडी. ठीक है, मतलब श्रवणा के थ्रू, रिफ्लेक्ट दैट इज मनाना. ठीक है, उसके साथ में मेडिटेशन. ठीक है, निध्यासना. ठीक है, ये तीन पार्ट्स होते हैं हमारे अद्वैत वेदांत में. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन हो गया. रियलाइजेशन मतलब you will understand that what's the reality and what's not, right? यहाँ पे तुम्हें ध्यान में आएगा कि illusion जो है वो ब्रेक हो चुका है. तो वो illusion हो किसकी वजह से रहा था? Because of this lack of knowledge, right? तो जब वो अविद्या हटेगी तो उसके बाद हमें truth दिखाई देगा and we'll reach the ultimate reality, that is Brahma. ठीक है, understood? क्या समझ आया हर्षित? Basically, Advaita Vedanta is that Atman is Brahman. And pointing out to the non-dual experience. He also defines avidya as lack of knowledge. And find we try to, indulge in practices which make ourselves with the meeting together. Also, Maya is an illusion. We must not concentrate on Maya much. As the reality is Brahman. अंडरस्टूड. आर्य, कोई क्वेश्चन, कोई चीज दिमाग में चल रही है? Maya is neither completely real nor completely unreal. So I was not able to understand. In which concept are you asking? In Advaita Vedanta, where we are studying about Maya, like what is Maya? Then Shivani asked some question. I'm not remembering my question, but then you explain that Maya is not completely unreal. It is real. श्रीनिधि तो 3 दिन पहले आई थी. In last class when you teach us Advaita Vedanta. Okay, in last week I think I explained this. Question क्या था उसका? क्या बोला था? She was asking about something unreal, like she was asking about something Maya, what is illusion. So you told us that Maya is neither completely real nor completely unreal. Like you said that it is indescribable, not totally real like Brahma, and not totally unreal like Swarsa. नहीं, इसका कुछ और होगा इसका मतलब. Not fitting that. I think this I explained in the Saturday's class. Last Saturday maybe कभी तो.
अच्छा, give me today's time. मैं देखती हूँ वीडियो, फिर उसके बाद I'll come to this. Any other thing? Should we wind up? चलो. I'll see you tomorrow at the same timing. ठीक है? Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, बच्चे.